मॉड्यूल 2 यूनिट 2 का जो सॉल्यूशन है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट है। एक सेल्फ असेस बाय सेलेक्टिंग योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। आपने बताना है कि आपका इस फील्ड में, इस पॉइंट पे या इस सेंटेंस में आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है। अबाउट ईच एलिमेंट इन द टेबल में जो एलिमेंट दिए गए हैं उस हवाले से। यूजिंग स्केल वन को आपने लोएस्ट लेवल पे रखना है और जो स्केल 5 है वो हाईएस्ट पे है। आई कैन इंगेज ऑल माई लर्नर्स इन रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग लेसन्स। मैं अपने तमाम लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को जो है वो इंगेज कर सकता हूँ रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग लेसन्स के हवाले से। इसमें देख लें आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे है। ये आप टास्क के साथ तक कर सकते हैं, 3 पे है, 4 पे है या 5 पे। जो भी आप आंसर देंगे वो आपका ठीक होगा। आई आस्क डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। मैं मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछ सकता हूँ टू हेल्प माई लर्नर्स, अपने स्टूडेंट्स की मदद के लिए। डेवलप स्पेसिफिक क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, खास किस्म के क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो हैं उसको प्रमोट करने के हवाले से। तो इसमें क्या है कि आप दे सकते हैं 4, 5 अगर आपका वीक है तो आप इस 1, 2 भी दे सकते हैं। आई कैन आइडेंटिफाई टेक्स्ट बुक रीडिंग एक्टिविटीज दैट डेवलप डिफरेंट सब स्किल्स। मैं जो है वो मुख्तलिफ तरह की जो टेक्स्ट बुक के अंदर रीडिंग के हवाले से एक्टिविटीज़ दी गई हैं उनको डेवलप कर सकता हूँ मुख्तलिफ सब स्किल्स के हवाले से। इसको भी आप जो नंबर देंगे वो ठीक होगा आपका। आई नाउ व्हाट टू कंसीडर व्हेन प्लानिंग रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग लेसन्स। मैं जानता हूँ कि मैंने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं जब मैंने कोई भी रीडिंग या क्रिटिकल थिंकिंग लेसन्स के हवाले से मनसूबाबंदी करनी है। इसका भी कोई आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स के हवाले से क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन है टोटल। द लर्नर स्टार्ट रीडिंग स्ट्रेट अवे। लर्नर्स को रीडिंग जो है वो सीधी जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, डायरेक्ट जो है वो रीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्या है? फॉल्स है। द टीचर शोज ए पिक्चर कनेक्टेड विद स्टोरी। टीचर जो है वो एक तस्वीर दिखाता है जिसका ताल्लुक स्टोरी से है। ये क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है। द टीचर आस्क द लर्नर्स क्वेश्चन। जो टीचर है वो मुख्तलिफ तरह के सवाल पूछता है तालिब इल्मों से। ये क्या? ट्रू है। द टीचर राइट्स द टाइटल ऑफ स्टोरी ऑन द बोर्ड। टीचर जो है वो टाइटल जो है स्टोरी का, कहानी का जो टाइटल है वो बोर्ड पे लिखता है। तो ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा। नंबर 5, द टीचर यूजेस ए प्रॉप एंड मीनिंग टू टीच सम न्यू वर्ड्स। मुख्तलिफ किस्म के जो नए अल्फाज हैं उनको सिखाने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं? प्रॉप एंड मीनिंग। ये क्या होगा? ट्रू होगा। 6 है द लर्नर्स आर इंगेज्ड इन द लेसन। लर्नर को जो है वो स्टूडेंट्स को आपने इंगेज रखना है लेसन के अंदर। ये क्या होगा? ट्रू होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड्स फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी कैद एप्लीकेशन के अंदर जहाँ पे आप ईस्ट ऐप पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आपने सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट द वर्ड्स फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट टू कंप्लीट द समरी ऑफ वेज टू इंगेज लर्नर्स इन ए रीडिंग लेसन। इंगेजिंग लर्नर्स इन ए स्टोरी। इंगेज करें आप लर्नर्स को स्टोरी के अंदर। रेज लर्नर्स इंटरेस्ट। लर्नर्स का जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ाएं इन द स्टोरी, स्टोरी के अंदर बिफोर दे ओपन देयर टेक्स्ट बुक्स एंड स्टार्ट रीडिंग। रेज लर्नर्स इंटरेस्ट, जो लर्नर्स का इंटरेस्ट है उसको आप बढ़ाएं इन स्टोरी, कहानी के अंदर बिफोर दे ओपन देयर टेक्स्ट बुक्स एंड स्टार्ट रीडिंग। इससे पहले कि स्टूडेंट्स जो है वो अपनी टेक्स्ट बुक्स खोलें और कहानी स्टार्ट करें, तो आपने उसमें अपने लर्नर्स का इंटरेस्ट डेवलप करना है उसको पढ़ने से पहले। द लर्नर यूजेस हर वॉइस। द टीचर यूजेस हर वॉइस। जो टीचर है वो अपनी आवाज़ इस्तेमाल करता है एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, और अपने फेस के जो तसरात हैं उनको इस्तेमाल करता है। टू साउंड एंट्रस्टिक अबाउट दिस स्टोरी। चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड वेल टू दिस। चिल्ड्रन जो है वो इसका अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, जवाब देते हैं। इट हेल्प्स देम टू फील एक्साइटेड।
ये उनकी मदद करता है उनको एक्साइटेड फील करने के लिए अबाउट व्हाट दे आर गोइंग टू रीड, कि वो क्या पढ़ने जा रहे हैं। विद यंगर चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के साथ यू कुड यूज ए टॉय, आप एक खिलौने का इस्तेमाल कर सकते हैं टू इंट्रोड्यूस द स्टोरी। ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, पहली जो यहाँ पे है वहाँ पे आपने इंटरेस्ट जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेलेक्ट करना है, उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके बाद टॉय। टेलिंग लर्नर्स द टाइटल, टाइटल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। और इंट्रोड्यूसिंग ए कैरेक्टर फ्रॉम द स्टोरी हेल्प्स लर्नर्स टू फाइंड आउट अबाउट what they are going to read. Younger children will enjoy acting like character too. For example, if the story is about a cat, you can ask them what do cats do. जब एक स्टोरी जो है कहानी वो कैट के हवाले से है, बिल्लियों के हवाले से, तो आप पूछ सकते हैं कि बिल्लियाँ क्या करती हैं, what sound do they make, किस तरह की आवाज़ें वो निकालते हैं। You can ask about feelings and opinions, आप उनके तसरात और ख्यालात भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स के, टू इंगेज देम इन द स्टोरी, स्टोरी के अंदर उनको महव रखने के लिए। फॉर एग्जांपल, डू यू लाइक कैट्स, क्या आप बिल्लियों को पसंद करते हैं, एंड वाई, और क्या वजह है, क्यों पसंद करते हैं। यूज पिक्चर्स टू बिल्ड लर्नर्स इंटरेस्ट इन द स्टोरी, यू कुड ट्राई पिक्चर फ्रॉम द स्टोरी ऑन द बोर्ड और आस्क लर्नर्स टू लुक एट ए पिक्चर इन देयर टेक्स्ट बुक। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपने यहाँ पे टेक्स्ट बुक जो है वो सिलेक्ट करना है। यू कैन आस्क क्वेश्चंस, आप सवालात पूछ सकते हैं, लाइक व्हाट कैन यू सी, आप क्या देख रहे हैं या आप क्या देख सकते हैं। व्हाट इज शी डूइंग, वो क्या कर रही है। वेयर इज ही शी, वो कहाँ है। दिस गिव्स चिल्ड्रन एन आइडिया, ये तलबा को, बच्चों को एक आइडिया देता, ख्याल देता। व्हाट द स्टोरी इज अबाउट, स्टोरी किस चीज़ के मुतालिक है। द टीचर यू सा इन द वीडियो, जो टीचर आपने देखा है वीडियो के अंदर। आल्सो यूज ए पेन एंड मीमिंग टू टीच न्यू वर्ड्स, मीमिंग पे भी आप लोगों ने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट पे से ये सिलेक्ट करना है। मैचिंग विद टेक्स्ट बुक, इन योर टेक्स्ट बुक यू विल फाइंड सम एक्टिविटीज टू इंगेज लर्नर्स इन रीडिंग लेसन्स। रीडिंग लेसन के अंदर लर्नर्स को इंगेज रखने के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की चंद एक सरगर्मियाँ हैं जिनको आप टेक्स्ट बुक के अंदर से फाइंड आउट करेंगे। हेयर इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम ग्रेड 4 के हवाले से एक एग्जाम्पल है। सेलेक्ट 3 टेक्निक्स इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के हवाले से आप 3 टेक्निक्स जो हैं वो देखेंगे। यूज योर वॉइस एंड फेशियल एक्सप्रेशंस टू साउंड इंटरेस्टिंग अबाउट द स्टोरी। यूज प्रॉप्स एंड मीमिंग टू टीच सम न्यू वर्ड्स। इसमें से आपने 3 सेलेक्ट करनी है। वो 3 कौन सी हैं। आस्क लर्नर्स अबाउट देयर आइडियाज एंड ओपिनियंस रिलेटेड टू टॉपिक, और दूसरा जो है शो पिक्चर कनेक्टेड विद स्टोरी, उन तस्वीर को दिखाएं जो कि जिनका ताल्लुक स्टोरी से हो। इंट्रोड्यूस ए कैरेक्टर, ये आपने नहीं सेलेक्ट करना। टेल लर्नर्स द टाइटल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का टाइटल बताएं। ये 3 आपने सेलेक्ट करने हैं जितने भी यहाँ पे गिवन है। Choose the correct option. Lower order teaching skills or higher order teaching skills for each question. How many times did the boy go to cobbler? ये क्या है, लोअर ऑर्डर टीचिंग स्किल्स है। डिड यू लाइक them cobbler, ये क्या है, हायर ऑर्डर टीचिंग स्किल्स है। व्हाट इज likely to happen if we continue to waste water, ये क्या है, हायर ऑर्डर टीचिंग स्किल है। What is paper made of, lower order teaching skill है। Can you say the names of 2 places you have visited in Pakistan, lower order teaching skills है। How can you restore a garden in your surroundings, higher order teaching skills। Here are some examples of open questions a teacher could ask learners about a story they have read. Select the drop down list. The critical thinking skills, each question help to develop। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी जिसमें से आपने सेलेक्ट करना है। लर्नर्स गिव देयर ओपिनियन और असेसमेंट अबाउट द टेक्स्ट एंड गिव रिस्पांस टू सपोर्ट इट। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ स्टोरी, व्हाई। इवेलुएटिंग हायर ऑर्डर टीचिंग स्किल्स, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में 5-6 जो हैं वो इस पहले क्वेश्चन के हवाले से हमारे पास क्या आता है, इवेलुएटिंग
HOTS. Learners use their imagination to make new ideas. How else could this story end? ये क्या होगा? Creating higher order teaching skills. Learners recall events from the text. What happened in the story? Remembering lower order teaching skills. Learners use their knowledge and what they learn to solve a problem. What would you do? Applying lower order teaching skills. Learners identify the meaning of the text. What was the main idea of the story? ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपने क्या सेलेक्ट करना है? अंडरस्टैंडिंग लोअर ऑर्डर टीचिंग स्किल्स. लर्नर्स एक्सप्लोर कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टोरी. What was the biggest mistake the main character made? What happened because of that? What happened because of that mistake? Analyzing higher order teaching skills. Select the statement you agree with. आपने वो statement select करनी है जिससे आप agree होते हैं. Reading involves word recognition and understanding of text. इसको आपने टिक कर लेना, select कर लेना है. Reading is an active process. इसको भी टिक कर दें. Reading is a process that involves 3 phases: pre, while and after reading. ये इसको भी टिक कर दें. Reading is only assessed by teachers through comprehension questions. ये क्या होगा? इसको आप क्लिक ना करें. Select each reading techniques from the drop down list to match it to the correct description. ये भी यहाँ पे drop down list है, यहाँ से आपने select करने हैं. The reader quickly reads to find the relevant piece of information and ignores the irrelevant information from the text. ये क्या होगा? skimming. इसका ताल्लुक किससे है? skimming से. Through this technique, the reader focuses on the main ideas of the text. इसको क्या कहेंगे? scanning. The reader is also to create mental pictures based on the text. इसको क्या कहेंगे हम? visualizing. The reader is able to understand the meaning of an unfamiliar word by reading the text before or after the word. इसको क्या कहेंगे? Using context. This critical learning technique builds lifelong mental abilities. It trains the brain to remember information and focus, memorizing. Through this technique, the brain quickly notices a familiar word without making a conscious effort. इसको क्या कहेंगे? Recognizing. Readers are able to understand the text they read by relating it to their previous knowledge and experiences, making connection. Reader remain engaged through this technique as they can anticipate what happens next in the story, predicting. Readers can retell important parts of the story in their own words in a much shorter way, summarizing. Below are some of the key principles that make a reading lesson great. As you read them, think about the lesson you described earlier in the discussion forum. And think if you think you or your teacher followed the same principles. Ask questions and let the learners predict what is coming next. Use headlines and pictures in the text to increase motivation and build interest. Encourage learners to explore their feeling about the text. Use a variety of activities such as skimming, scanning, or reading for detail. इन सब को आप क्लिक कर दें. Use the text for further tasks such as discussion or summary writing. Make reading communicative by having learners work in pair and groups. Help learners see the value of what they are reading by making connections to their own lives. Element of effective reading and critical thinking activities using scale 1 lowest to 5 highest. I can engage. ये पहले भी कर चुके हैं. आप इसमें से कोई एक जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं. इसको 1 से लेकर 5 तक कोई भी नंबर दे सकते हैं. You should not give any information about the reading text before learners start reading. ये क्या होगा? false होगा. Higher order thinking skills can be developed at all grades. True है ये. To develop fluency, teachers should focus on developing learners' memory and accuracy. ये क्या? false है. Choose the best answer to complete the statement.
helps the learners to connect their existing knowledge to new information predicting. You can ask learners for their opinions and ideas to engage them in a reading lesson. You can use questions to develop learners' thinking skills. ये क्या होगा lower order and higher order. By summarizing, learners are able to retell the gist of a text in their own words. Choose the best answer to complete this statement. Scanning helps the learners look for answer quickly, directly, and specifically. Higher order thinking skills can be developed at all grades. ये क्या होगा? 2 होगा. Predicting helps the learners to connect their existing knowledge to new information. You can questions in the textbook and your own questions to develop learners' critical thinking skills.